Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasalli ala rasulihil kareem amma ba'd. Let's continue with the next fasal. Fasal number 22, नियामतों का छिन जाना और बलाओं का हुजूम. This chapter number 22 is about how the disobedience is going to bring about deprival of bounties of Allah subhanahu wa ta'ala, and a person will be afflicted by different calamities. एक नुकसान ये है कि गुनाह करने से नियामतें सल्ब हो जाती हैं, छिन जाती हैं, और बलाओं और मुसीबतों का हुजूम हो जाता है. One of the harms of disobedience towards Allah subhanahu wa ta'ala and His commandments is that the bounties are taken away, and different calamities and different trials and tribulations start to crowd oneself. Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu का इरशाद है, फरमाते हैं कि नहीं नाजिल हुई कोई बला मगर बसबब गुनाह के, और नहीं दूर हुई कोई बला मगर बसबब तौबा के. Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu informs us that not a single bala calamity descends upon one except that it is due to a disobedience or a sin, and not a single calamity or trial or tribulation leaves an individual except that it is through repentance. Allah Ta'ala irshad फरमाते हैं, Allah subhanahu wa ta'ala has said, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. यानी जो मुसीबत तुम पर आती है वो तुम्हारे आमाल के बसबब आती है, और बहुत सी बातों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं. Any calamity that comes to you and afflicts you, it comes to you because of the deeds that you have done. And many of the things Allah subhanahu wa ta'ala forgoes. और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. यानी इस सबब से है कि अल्लाह ताला कभी उस नेमत को नहीं बदलता जो किसी कौम को दी हो, यहाँ तक कि वो लोग अपनी ज़ाती हालात को बदल डालें. That Allah subhanahu wa ta'ala does not change the conditions of the bounties that have been given to any nation. So much so that the people change their own halat, their own conditions, which will in turn cause the calamities to come about. इससे मालूम हुआ कि ज़वाल नियामत गुनाह ही से होता है. From this it is known that the deprival of the ni'mat of the bounty is only through the sins. Chapter number 23. अलक़ाब मदह और शर्फ का सल्ब होना और अलक़ाब मुज़म्मत का मुस्तहिक होना. Chapter 23, there is all those affixes and all those titles which are about praise and nobility, they are taken away because of the disobedience a person is doing, and all those titles and affixes which are about a derogation or being lowly are attributed to oneself. एक नुकसान ये है कि गुनाह करने से मदह और शर्फ के अलकाब सल्ब होकर मुज़म्मत और ज़िल्लत के खिताब मिलते हैं. One of the harms of the disobedience of an individual towards Allah subhanahu wa ta'ala is that those affixes and attributes which are of nobility and of praise, they are taken away, and instead those which are of a rebuke and lowliness are attached towards the individual. Mathalan, for example, नेक काम करने से ये अलक़ाब अता हुए. If a person does something good deed, then he is given one of these attributes: मुमिन, बिर, मुती', मुनीब, वली, वरा', मुस्लिह, आबिद, खाइफ, अव्वाब, तय्यब, रदी, ताइब, हामिद, राक़ि', साजिद, मुस्लिम, क़ानित, सादिक़, साबिर, खाशिअ, मुतसद्दिक़, साइम, अफ़ीफ़, ज़ाकिर व नहव ज़ालिक. These titles are given to the one who is obedient, believer, pious, obedient, one who turns back to Allah subhanahu wa ta'ala, friend, righteous, worshipper, one who fears disobedience, one who excessively turns back, pure, favorite, repentant, praiser, one who makes ruku', one who prostrates, submitter, content, truthful, patient, humble, charitable, fasting person, chaste, excessively remembers Allah subhanahu wa ta'ala, and others like that. जब बुरा काम किया तो ये खिताबात मिले: फाजिर, फासिक, आसी, मुखालिफ, मुसी, मुफसिद, खबीथ, मसखूत, जानी, सारिक, कातिल, कादिब, खाइन, लूती,
qati' ar-rahm, mutakabbir, zalim, jahil, wa ghayra dhalik. If a person does any bad deed or disobeys Allah subhanahu wa ta'ala, then he gets one of these titles: transgressor, sinner, disobedient, opposer, wrongdoer, corrupter, impure, angered upon, adulterer, thief, murderer, liar, untrustworthy, sodomizer, breaker of ties, haughty, oppressor, ignorant, etc. May Allah preserve us, may Allah give us the good qualities. फसल 24, chapter 24, शयातीन का तसल्लुत, devils ensnare the individual. एक नुकसान यह है कि गुनाह करने से शयातीन इस पर मुसल्लत हो जाते हैं. One of the harms of disobedience is that the shayateen, that is the devils, they become imposed upon this individual. क्योंकि ताअत एक खुदावंदी किला है. Because obedience is like a fort, जिसके सबब आदा दुश्मन का गलबा से महफूज रहता है, due to which enemies are unable to overpower and a person is kept safe from it. जब किला से बाहर निकला, दुश्मनों ने घेर लिया. When a person comes out of the fort, then the enemies they encircle the individual. फिर शयातीन जिस तरह चाहते हैं उसमें तसर्रुफ करते हैं. Then these devils and the shayateen, as they wish, they will do with the individual. और उसके क़ल्ब व ज़बान, दस्त व पा, चश्म व गोश सब आदा को मासी में गर्क कर देते हैं. They will envelop the heart and tongue, his hands, his limbs and his eyes and his ears, every limb of his body into the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. फसल नंबर 25, इत्मीनान क़ल्ब से महरूमी. Point number 25, a person is deprived of the contentment of heart. एक नुकसान यह है कि गुनाह करने से क़ल्ब का इत्मीनान जाता रहता है. One of the harms of disobedience is that a person loses the contentment of his heart. कुछ परेशान सा हो जाता है. He gets perturbed somehow. हर वक्त खटका डर लगा रहता है कि किसी को खबर ना हो जाए. He is always worried and cautious. Somebody might find out about his sin, find out about his disobedience. कहीं इज्जत में फ़र्क ना आ जाए. He frights that he is going to lose his honor. कोई बदला ना लेने लगे. Somebody might take revenge. मेरे नज़दीक माईशत दंग का बवानी तंग के यही माने हैं. In my eyes, and this is the Musannif saying that according to him, the meaning of the ma'ish dank is also the same when a person finds that he is unable to fulfill his duties financially and things like that as well. फसल नंबर 26, मरते वक्त कलमा तय्यबा से महरूमी. Chapter number 26, one is deprived of stating or saying the Kalimah, that is La ilaha illallah, at the time of death. एक नुकसान ये है कि गुनाह करते करते वही दिल में बस जाता है. One of the harms is that a person commits the sin repetitively and that becomes part of his heart. यहाँ तक कि मरते वक्त कलमा तक मुंह से नहीं निकलता. So much so that at the time of death the person is unable to recite his kalima. बल्कि जो अफ़आल हालत हयात में गालिब थे वही उस वक़्त भी सरज़द वाक़े होना होते हैं. Rather, those actions which were prevalent in his life, the same actions start to happen at the time of death as well. एक ताजिर अपने अजीज़ की हिकायत बयान करता है. One merchant mentions about one of his friends an incident at the time of his death कि मरते वक्त उसको कलमे की तलकीन करते थे. We were giving him incitement towards saying the kalima at the time of death. और वो ये बक रहा था and he was saying कि ये कपड़ा बड़ा नफीस और उम्दा है. This cloth is very fine and fancy. ये ख़रीदार बड़ा खुश मामला है, लेन देन में अच्छा है. This particular customer is very good in his dealings. आखिर इसी हालत में मर गया. And it is in this condition that he died. किसी साइल की हिकायत है. It is mentioned about one beggar. मरते वक्त कहता था, he would say at the time of death, अल्लाह के वास्ते एक पैसा, अल्लाह के वास्ते एक पैसा, इसी में तमाम हो गया. For Allah say give me one पैसा, for Allah say give me one पैसा, and he died in this way. इसी तरह एक शख्स को नज़्म मौत के वक्त कलमा पढ़ाने लगे. Similarly, people try to incite one person to say the kalima at the time of his death. कहने लगा, he replied,
मेरे मुंह से नहीं निकलता, ओह इट डज नॉट कम आउट ऑफ माई माउथ। और बहुत से हालात हैं उस वक्त के कि उनको हमको मालूम भी नहीं है, खुदा जाने और क्या गुजरती होगी, खुदा की पनाह। एंड देयर आर मेनी अदर इंस्टेंसेस which we don't even know about. Allah knows what would happen at that time. May Allah protect us. फसल नंबर 27, रहमतुल्लाह अलैहि। फसल नंबर 27, रहमत इलाही से ना उम्मीद होना। Chapter number 27, another consequence, outcome of disobedience is a person becomes despondent of the mercy of Allah. एक नुकसान यह है कि गुनाह करने से रहमत इलाही से नाउमीदी हो जाती है। One of the harms of disobedience is that one of the harms of the disobedience is the person loses his hope in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. इस वजह से तौबा नहीं करता, and he does not do tawbah, he does not repent because of this, और बेतौबा मर जाता है, and he dies without any तौबा। किसी शख्स से मरते वक्त कहा गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे। Somebody was told at the time of his death, please say ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने गाना शुरू कर दिया, ता ता तुम तना, और कहने लगा जो कलमा मुझसे पढ़वाते हो उससे मुझको क्या फ़ायदा पहुंच सकता है। He said, he started to sing in a melodious tone and started saying that the kalama that you want me to say, what will it affect me? What benefit is going to give me? कोई गुनाह तो मैंने छोड़ा नहीं। I did not leave any sin. आखिर कलमा ना पढ़ा और रुखसत हो गया। In the end, he did not say the kalama and he died in that state. किसी और शख्स से कलमा पढ़वाने लगे। Someone else was told to recite the kalma at the time of his death. बोला, he said, इस कलमे से क्या होगा? What will this kalma do for me? मैंने कभी नमाज तक तो पढ़ी ही नहीं। I never recited the namaz. I never prayed namaz. I never prayed salah. वो भी यूं ही मर गया। He also died the same way. किसी और शख्स से कलमा पढ़ने को कहा। Someone else was told to recite the kalma at the time of his death. कहने लगा, he replied, मैं तो इस कलमे का मुनकर हूँ, और चल दिया। I don't believe in this kalma, and he died. एक शख्स ने ये बयान किया कि कोई मेरी ज़बान पकड़ लेता है। One person responded in such a condition that somebody holds my tongue and that I am not able to say the kalama. Allahumma hafazna minhu. Oh Allah, please protect us from these kind of situations. Ruju bihi maqsood. Returning to the objective. ये चंद मुदारते नुकसानात दुनियावी जो गुनाह करने से लाहिक होती हैं। ये चंद मुदारते नुकसानात दुनियावी जो गुनाह करने से लाहिक होती हैं, और अलावा इनके बहुत से दरर ज़ाहिरी और बातिनी हैं जो कुरान और हदीस में गौर करने से और ख़ुद दिल में सोचने से बहुत जल्द समझ आ जाएंगे। These some harms of worldly disobedience that happens to an individual, and aside from this there are many other apparent and unknown which we will get to know once we start to ponder on the Quran and Hadith. और आखिरत में जो मुदर्रतें हैं वो अलग हैं। These were for the world. Whatever we have for the आखिरा, that is hereafter, that is completely different, जो अनक़रीब मुख्तसरन मज़कूर होंगी, which we shall mention separately individually इंशाअल्लाह। आक़िल हरगिज़ पसंद नहीं कर सकता कि ज़रा सी इश्तिहाए काज़िब झूठी ख्वाहिश के लिए इतना पहाड़ मसाइब और कुल्फ़तों का अपने सर पर ले। An intelligent person would never accept or like that just for a mere small unreasonable desire, fake desire, superficial desire, a person takes on calamities the size of mountains upon oneself.
रोज़ाना मुआमलात में जिस चीज़ में मफासिद और मुदर्रतें गालिब होती हैं, आदमी उसके पास नहीं भटकता। All the calamities and all the tribulations that come to us in regular dealings in our regular life on a daily basis, we don't go close to them. We try to avoid them as much as possible. यही बर्ताव मासी के साथ करना है, यही बर्ताव मासी के साथ करना लाजिम है। The same attitude has to be adopted with regards to the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala हम सबको मुसलमानों को अपनी नाफरमानी से महफूज रखे। May Allah protect us from disobedience of himself. Ameen thumma ameen. So here we close one whole section of the book, and then we will continue with the second chapter or second section of the book, inshallah. Jazakallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.